Hello, hello, hello. Cheers everyone. I hope everybody is doing good. और मेरी आवाज अच्छे से आ रही हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दो. Cloud. I guess sorry, this is the topic I guess I was waiting for long. मेरे पास बहुत सारे DMs at least last 8 months में जितने DMs आए हैं कि सर हमें बताओ, we want to know about this cloud, how we should get our career started, how we should get to know about the terminologies that is going to help us in future to establish us as a cloud engineer या cloud administrator. या बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि यार आप Amazon में काम करते हो, so tell us more about what this typically cloud computing means to you and to the entire world out there also. But before we start off the session, there is a disclaimer that though me and our guest today, we both work for Amazon, this video is purely done by us and we want to just share our experience. This is not a sponsored video from Amazon or influenced by Amazon. This is just purely our intention to serve back to the community, right? So please, we will be talking and doing the generalized terms that are available, but we want to guide you on the right path, that if you want to be an aspire to be a cloud engineer, why don't you try these hacks, tips and tricks that we want to discuss. Okay, so comment section mein, I can just see Chirag is there. Hey Chirag, welcome and thanks for joining. I hope my voice is audible. Agar koi live sun raha hai hame to yaar please ek comment dal do. Now, without further ado, let me introduce my friend today. So, today I have a very interesting and a positive personality with me. What I can simply say, like this person, I met him in the January when I joined Amazon. And right from day one, he has been a mentor and a guide to me. For this person, I can simply say, like, with a positive attitude, you may not like able to solve all the problems, but that is the only option. That's the way you can solve any problem. So the positive attitude or the energy this person brings to my desk every single day, though hum log desk pe nahi baithte, but still every single day when I met him, when I ask him for a solution to my problems, he is always ready to help me. He is true my one I can say one of my guiding buddy and a mentor to me in the Amazon. So I just want to welcome Prabhakar Singh to you all. Hey Prabhakar, cheers man. Thank you so much for joining me live. Thanks, Cheers. Gaurav, first of all, for inviting me. And initially, I thought that you were roasting me by saying the good words, which we are not used to, especially hear from each other. So, thanks for हाँ, all those kind words. So, हाँ, yeah, and बिल्कुल. first of all, thanks for inviting me, especially to discuss about the topic which I love, because this is one of the topic which I am learning and still nurturing from the last 8 years, 2 years from college, and again almost 6 years professionally. हम्म. So yeah, so thanks again. थैंक यू. यार मतलब एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट एनकाउंटर बादल का जो हुआ, सो बादल मैं क्लाउड को रेफर कर रहा हूँ अभी. सो मैंने जब फर्स्ट टाइम ये टर्मिनोलॉजी सुनी थी, मुझे बस यही पता था कि क्लाउड का मतलब है कि किसी और का सिस्टम और बस आप यूज कर लो. इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था. So what was your first experience? Please tell our viewers that what was your first encounter with this word called cloud? So during 2014, one of my dear friends, Sibin Thomas, he has just given us the idea that okay, hey friends, during the vacations, I'm gonna join a class for cloud computing. And do you know that there is lot of about cloud? There is IS, there is a PaaS, there is a SaaS, and so we were like, okay, is there a cloud? So during those vacations, especially 2014 vacation after second year, during vacations I have spent almost 15 days to get more insight, basically what is cloud in detail. And if you know that in final year we had a chapter, we have to choose on one subject, cloud computing or AI. So I was Right. already fascinated by the cloud. So I have chosen a cloud. On the very first day, the teacher has asked, according to you, what is a cloud? And one of my dear friend now is working as a SD3 in one of the organization MNC. He said that, ma'am, I know about cloud computing, but I have a query. If there is a cloud burst, then how you will gonna save your data? And Mm-hmm. whole class was laughing. So again, we got a chance that to explain that what is a cloud. So
in a layman today, basically, I was means last July there was one volunteering session. I was giving the sessions to one of the schools in Haryana in Hindi. So I asked them, students of ninth standard, do you know about cloud technology? Did you heard somewhere what is this technology? So one fellow student has given a very best answer till now what I have learned. He said, "Sir, cloud computing is basically accessing my data over an internet is called the cloud computing." I वाह, said, yes, क्या this बात है is यार. the best expert. I actually this was not expected from a ninth standard student who is studying Hindi medium in rural Absolutely. area. If he is saying that accessing my data over an internet is called a cloud computing, I said yes. Somehow you are correct. You are accessing your data. So that Mhm. this is how I got encountered. And fortunately, during the placement, I got a job as an SD. But somehow I was aware that SD is not a cup of my tea. So I have to go. I have to look something where I am interested. I got a chance to work for one of the organizations is Microsoft partner in cloud. So I said, yes, this is the job where I have to get into this. That's why I started my journey from support, then into the different loan, then deployment, then BEd as an administrator, slowly learning. And again, cloud is one of the domain where you have to learn each and every day. As we know that, we both know that every week there is an update which we have to go and read. We have to Right. aware that okay, there is a new technology, there is a new update in existing technology. So that's where if you are looking for a cloud, be ready because you have to be on your feet. You have to be a learner each and every day. So I guess, long story short, basically, if I have to summarize, cloud computing is nothing but accessing your data over internet, and that Yes. summarizes very well. Right. आपने अभी just बात करी एक term की cloud burst, and I guess already it started raining at my place. तो एकदम वाइब कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, cloud computing एकदम सही ढंग से हम लोग कर रहे हैं. But before I move on to our next question, I just want to remind our viewers, if you have any questions, guys, feel free to drop your questions in the chat. I can see a few of our team members joining us today. Hey, Anant, thank you so much for joining. My mom is always the biggest supporter of me, so family वाले support Hello, कर Auntie रहे Ji. Thanks for हैं. Prashant is there. Hey, Prashant. Hey, Vivin. And I guess lots of love. You want to send it to your family member as well. I can see Kajal has joined, and so has the Sonali. So thank you so much, everyone, for joining. If you have any questions for Prabhakar, please feel free to drop in the comment section. And towards the end, we will also have a fun quiz for Prabhakar plan. जो मतलब हमने बड़े मैंने इसने तो नहीं, but हाँ मैंने एक प्लान किया है प्रभाकर के लिए टू टेस्ट कि इनकी क्लाउड नॉलेज कैसी है. राइट. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. बट प्रभाकर, एक चीज इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग इस चीज से एक्साइट हो जाते हैं कि लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाउड, बहुत बड़े बड़े वेंडर्स और नाम्स आ गए हैं मार्केट में, लाइक टॉकिंग अबाउट Amazon और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल फॉर दैट मैटर. But people still thinks that if you are working for these companies, you are definitely working in the cloud. Or in the other way around, if somebody wants to get into these companies, they just need to learn the cloud. And whatever the question I am getting, in a short, what I want you to help us with is, if somebody wants to get started with the cloud, what are the options that they can choose, and what are the tips and tricks they should keep in mind कि भाई अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बना रहा हूं तो मुझे किस किस चीजों के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए, और ये चीजें मुझे जरूर पता होनी चाहिए irrespective of companies. Yeah. Okay. So first of all, let's talk about fundamentals for any of the cloud, be it your private cloud, public cloud, or hybrid cloud. We are talking about. The two or three things are common, which will never go away from IT. First is a server. Second, storage. Third, networking. You should know about basics of these three, especially if you're looking from an infrastructure as a service. Because again, if you know that cloud is of three offerings: infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Now we say database as a service, disaster is a recovery as a service. But again, those fall under bracket of platform as a service. Right. Again,
let's say if you are in more interested toward automation of infrastructure, you want toward SRE kind of job where you want a monitoring and deployment and management role perspective, that infrastructure as a service, then the fundamental will always gonna same. You should know about storage. So basically the chapter which we have learned in college day called operating systems and computer networks, because those are the fundamentals of any IT. That will not gonna change you do anywhere, be it on premises. In case if you are building your own data center, you have to deploy storage, you have to deploy your server, you have to deploy those racks. What is cloud offering? The moment we say public, basically we are getting as a service. Somewhere Right. Amazon or Microsoft or Google, Alibaba, anyone is have rented, have those space, they have deployed those huge racks with one number of servers with be it Intel, AMD, Graviton, any type we have and we are using on demand basis. Ensure that you clear the basics of storage, operating system, network. Then, like again, these are specific to infrastructure as a service. If you are looking for a platform as a service where you want to use about, let's say, as a developer, if someone is into the development, be it application developer or API developer, any kind of thing. So in that case, you should know the fundamental of what whichever language you use, be it your Java, in case of your DBA, then you should know SQL, MySQL, anyone where you prefer. On top of that, you have to just learn. You have to learn the additional concepts of, let's say, in case of your hosting at your on premises, you have to know about that particular database engine. In case of MS SQL, you should know about what is SQL standard, what is SQL mirroring, what is users. The same concept goes on cloud also. Nothing changes. The only thing you should be able to relate them. As you mentioned that nowadays we have multiple cloud. Again, fundamentals are same. There might be that additional features. Somehow we see that for any particular service, vendor A is leading that on in some of the cases vendor B is leading. You have to just able to relate the concepts and what are the new features. Otherwise, fundamental gonna remain same in any of the cloud which you will gonna use in coming days. And software as a service, as you know that nowadays we are using n number of services on our mobile anywhere. That is again software as a service. The biggest example, whichever I try to give an example, are you using phone? Are you using Google Photos? That is again software as a service. 15 GB Right. free. If you need a storage more than 15 GB, you have to pay for that. That is subscription which you are buying. Yeah. एग्री। आई गेस यू मेड अ राइट स्टेटमेंट, और ये बहुत लोग गलत करते हैं। आई गेस जिसको भी क्लाउड सीखना होता है वो जस्ट सीधा क्लाउड पढ़ने चला जाता है, और दे जस्ट चूज अ वेंडर एंड दे जस्ट स्टार्ट लर्निंग अबाउट देयर सर्विसेज। बट उससे भी एक पहले एक ग्राउंड वर्क इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक वो ग्राउंड वर्क है वेयर यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वन, second networking, third storage, which you just rightly mentioned, and I guess some additional things then you can go and build your expertise on. And I guess everyone, we have just taken this name, and ये सीरीज मैंने इसीलिए स्टार्ट करी है कि मेरे कुछ कलीग्स, मेरे जो नोन है, हम लोग इन स्पेसिफिक टॉपिक्स में इन फ्यूचर भी बात करेंगे इन डेप्थ में। This is just to give an overview ki like how Prabhakar has just started. We will be like coming out with a series of like in depth of these topics also, because Prabhakar has made a right statement ki these are equally important before you step into any cloud, right? अब So that's the most important, and for that सबको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना है और नोटिफाइड रहना है कि जब भी आपको भाई मौका मिलेगा मुझे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यू शुड बी एबल टू गेट द नॉलेज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑलवेज। तो दैट्स द वन थिंग। बट सेकंड, थैंक्स फॉर आंसरिंग दैट प्रभाकर। बट आपने एक पॉइंट अभी रेज किया, जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं है, बट स्टिल क्लाउड के अंदर ये टर्म बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, विच इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। yes. And I guess software आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि when we talk about Google Photos, everybody is talking about Google Photos nowadays. Everybody is storing on that part. आपका फर्स्ट एनकाउंटर कौन से सॉफ्टवेयर से हुआ था, या Google Photos ही आपका वो फर्स्ट एग्जांपल था जहां से आपको एक दिमाग में कहता है ना घंटी बजी कि यार ये Yes. सर्विसेज मेरा कौन मैनेज कर रहा है? हाँ, सो बेसिकली जब मेरा जो पहला एनकाउंटर हुआ था उस टाइम पे मैं याहू के ईमेल यूज करता था। तो बेसिकली जब अब क्या होता है ना, आपको फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस,
इन 2015 या 14 के टाइम पे आज हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वीडियोस हैं जो बताते हैं। उस टाइम पे आपको पता 2013-14 इज द इनिशियल डेज ऑफ क्लाउड when people was coming into was exploring this field. So at that point of time, I was not able to relate that. You know what is infra as a service, platform as a service, software as a service. I was reading for 10 days. All of a sudden, I got a click. I'm using email. Somewhere it will be hosted. Yes, Hmm. Yahoo is one of the service which is. Then again, after 5 days, I got a chance to visit my college. In my college, we have built our own data center. So I got a chance to connect with my admin and said, "Hey, can you show me our server room?" So he gave me a walkthrough of complete network, server, storage, and he just told me that, "Beta, this is the infrastructure as a service, which I am offering to your college." I said, "Yes, this is a hybrid." Then he mentioned that, okay, some of the email services or some of the storage I have stored on uh, vendor A. I'm not going to take a name of any of those particular vendor. I've Hmm. connected with my application, so that is called a platform as a service. So he just told me the explanation, and the only one thing that he told me that always try to relate your example with your nearby. Do not try to look something which you are not using. If you are able to relate on a day-to-day basis, you will be able to click the concept. You will know in depth actually how it is working. That's why I was able to relate. Okay, yeah, this is IS past and this. And second Right. most important thing, what nowadays, as you correctly mentioned that nowadays, if someone asks that how you want to learn a cloud, they try to go get a purchase a subscription and read only those parameters. That okay, this is this service, that service. You have whenever you're talking about cloud, just try to think actually in the back end there is something happening. It's it's not like that. For example, someone has asked me, "Bhai, I have a 4 GB of 4 core of instance, and I do the 8 core. Why it got rebooted? It's hosted on a cloud, na?" I said, Hmm. "Okay, since it's hosted on a cloud, but there is a mechanism. Just try to think from a back end because there will be 4 core machine. If there will be in my laptop, if I will try to upgrade a RAM, I have to take a reboot. So try to Right. relate those small concepts on it on it. Just try to break them. Then you will be Hmm. able to understand cloud concepts in a deeper mechanism. So you have to just Right. try to relate them. I think someone has asked you question also वो तो अभी आ about ही रहे हैं cloud क्वेश्चंस पे तो, platform. या I वो think तो क्वेश्चंस पे अभी आ ही रहे हैं। that's what I'm saying. Just do not try to learn first basics, storage, राइट। network, these things. After that, just try to learn basic concepts of cloud and try to relate them. Actually, if I'm doing these things, then how it will gonna happen at a back end? The moment you will try to relate it, you will know the cloud concepts in detail. मतलब मैं ना सबको एक एडवाइस करता हूँ कि तुम लोग कुछ मत करो, अपना लैपटॉप अपने सामने रखो या अपना कंप्यूटर अपने सामने रखो। अब इसमें से ना चीजें हटानी शुरू करो कि तुम्हें Right. लगता है कि यार ये सिस्टम में से मैं किसी और की जगह से भी ले सकता हूँ, तो मेरा काम एकदम सही तुम्हें क्लाउड समझ में आएगा। लाइक कुछ चीजें आपको नेसेसरी आपके सामने ही चाहिए। यार तुम कीबोर्ड एज अ सर्विस नहीं लॉन्च कर सकते, दैट Yeah. मेक्स नो सेंस। यू हैव टू प्रोवाइड सम इनपुट, बट एट द सेम टाइम अगर मैं इस ओएस को मेरे सिस्टम से हटा दूं और मैं ओएस ही किसी और से ले लूं, तो मेरे पास कितने वैरायटी ऑफ ओएस आ जाएंगे। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सीलेंट एग्जांपल बन जाता है। तो उस तरह से Absolutely. चीजों को ब्रेक करो एंड आई गेस दैट विल बी इजी। दैट यू आल्सो मेड अ पॉइंट कि पहले तो क्यूरियस हो चीजों को लेकर के। लाइक यू मेड मेंशन दैट कॉलेज इंसिडेंट। यार मैं कॉलेज में गया एंड आई अंडरस्टैंड कि ओह अच्छा यहाँ पर ये सारी चीजें अलग अलग जगहों से ही आ रही हैं, वी आर जस्ट एक्सेसिंग द एंड पॉइंट। या ईमेल का एग्जांपल इज फैंटास्टिक, आई गेस दैट मेक्स एब्सोल्युटली सेंस टू अस। So those talking on those terms, I guess एक terminology है which I cannot miss and I really want to ask you, but I guess अपने विपिन भाई ने उसको मेरे क्वेश्चन को चुरा लिया है। So he mentioned point virtualization is important. Virtualization important तो है, बट बहुत लोगों को मैंने ये भी सुना है कहते हुए, या मैंने मतलब आई गेस आई हैव लाइक इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु mismatches is cloud is also a virtualization. Your thought on the same? First of all, let's try to understand in a one step back. Let's say how the servers work.
Basically, if you're gonna buy a server, it will come in a packet of 24 core, 48 core, 64 core, 100 core, 500 cores, 1000 cores, totally up to depend on cloud provider and your requirement. Right. If I buy a 24 core, but in my organization I have a 10 different applications. Someone will require Red Hat, someone will require Linux, someone will require Windows, again, mix of operating system in those offerings. How can I deploy all those my operating system into single box? Right. Then I have to do a virtualize so that I can host my all operating system, my all requirement into that old big box. That's where we require virtualize. For example, I'm not sure how many are students. You can try in your laptop also. You can download OVM box. That is as you correctly mentioned. Try to just look at your laptop and install Hyper-V, install OVM box, try to install some of the Linux machine, then you will be able to relate at a backend. Okay, at a backend, actually there is a virtualization is going on. Because nowadays, in a public cloud, we know that we have a machines from 1 core to 64 core to 128 core. And in Right. the one box, I cannot make a one single machine. That's why I require a virtualization mechanisms. So that's why virtualization is a requirement, especially for compute. Any of the compute you can consider, ranging from normal virtual machines or any of the function as a service. We require virtualization that works as the backbone of all the compute instances. गॉट इट आई गेस यू मेड अ राइट स्टेटमेंट कि वर्चुअलाइजेशन का केस वही है कि अगर आपका यूज केस बन रहा है कि आई डोंट वांट टू यूज माय एंटायर रिसोर्सेज फॉर वन सिस्टम और मुझे मल्टीपल सर्विसेज को ऑफर करना है सो आई गेस द बेस्ट पार्ट इज टू गेट थ्रू virtualization only and that's why we've been made this right statement virtualization is equally important but I guess जो आपने सीरीज बताई थी ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ो फिर डाटाबेस है या नेटवर्किंग है और साइमल्टेनियसली जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तब वर्चुअलाइजेशन उसकी एक सब ब्रांच बना के उसको भी एक्सप्लोर करो एंड आई गेस दैट इज गोइंग टू इक्वली हेल्प यू टू बी अ सक्सेसफुल क्लाउड इंजीनियर ओके Yes. तो मेरे क्वेश्चंस पे ब्रेक लगाता हूँ क्योंकि मतलब हमारे लाइव व्यूअर्स के क्वेश्चन है वो लेने इक्वली इंपॉर्टेंट है सो चैतन्य हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन हाउ टू गेट अ जॉब इन अ पब्लिक क्लाउड करंटली आई एम वर्किंग इन अ क्लाउड प्रोफाइल बट इट्स अ प्राइवेट क्लाउड तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लेते हैं आप क्यों ना यार अपने एक्सपीरियंस से प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड या हम बोलेंगे एक हाइब्रिड क्लाउड भी जो आज एक नया टर्मिनोलॉजी चल रही है इन तीनों का एक एग्जांपल देते हुए चैतन्य का अगर क्वेश्चन आप आंसर कर सको फर्स्ट ऑफ ऑल चेतन, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत ज्यादा लोगों को क्वेरी होता है. Means I was working, one of my ex colleagues, he is working for an IT firm specifically who is dealing into hybrid model. तूने पूछा भाई यार मुझे तो AWS आता ही नहीं है, मुझे तो Azure आता ही नहीं है यार, तो मुझे जॉब कोई क्यों देगा? तो मैंने उसको चार सिंपल चीजें पूछी है. तुझे कंप्यूटर आती है? He said yes, मुझे आता है, मुझे मुझे सर्वर वर्चुअलाइज करने आता है, मुझे रैक में मुझे सब पता है कि स्टोरेज कैसे होता है. मैंने बोला अच्छा मुझे मशीन इस 4 से 8 कोर करनी तो आप कैसे करोगे? बोले मैं जाऊंगा हाइपर वी में, कोर में मैं अपडेट करूंगा. मैंने बोला उसमें क्या होगा? बोले मशीन रीबूट होगा. मैंने बोला दैट्स अ क्लाउड. क्लाउड में भी यही होता है, आपको सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन को रिलेट करना है. आप सब आपको आता है, आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया सीखना है, जस्ट आपको रिलेट करना है. हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज है. फॉर एग्जांपल ऐसे हमने बोला कि हम तीनों क्लाउड प्रोवाइडर, जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर, तीनों में टर्मिनोलॉजीज अलग है, फंडामेंटल सेम है, फंडामेंटल कहीं भी चेंज नहीं हुआ है. मेरा बैकग्राउंड कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट एजोर में रहा है, अब मैं AWS में हूँ, फंडामेंटल सेम रहा है. हाँ, टर्मिनोलॉजीज आपको नए सीखने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे कि हैंड्स ऑन, दोनों का UI अलग है, मैकेनिज्म कभी नहीं चेंज होता है. आप चैतन्य, आपके लिए एडवाइस है, जस्ट आप कोई भी आप कोर्स ले लीजिए, उसके पहले बेसिक्स पढ़िए, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी पता है. आप बेसिक्स पढ़िए, आपको लगता है कि आप लेवल 100 पे जाइए, क्योंकि आपको आपको जस्ट रिलेट करना है, फिर लेवल 200 जाइए. हाँ, लेवल 300, लेवल 400, जहाँ पे क्लाउड की जो नेटिव फीचर्स हैं, जिसे हम लेवल 300 बोलते हैं, उसमें आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होगी. उस केस में आप स्पेशली गौरव को या मुझे रीच आउट कर सकते हैं. वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट केस. Thanks for the putting me on the spot. But again, if you want to reach out Chaitanya,
मैं प्रभाकर का लिंक्डइन कनेक्ट डाल दूंगा इस लाइक पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. सो रीच आउट टू हिम. ही इज प्रीटी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन, so you can reach out to him, put your questions. At least I would say please go out and reach out to him, talk to him, ask your queries and design your own path. So that is there, right? So next question is coming from Minu, asking that can you help me out to learn the cloud platform. I guess इस क्वेश्चन को मैं भी लेना चाहता था कि अगर कोई बिगनर है, लाइक अ पर्सन हु इज प्रीटी मच स्टार्टिंग द थिंग्स, उसको कुछ नहीं पता है, और ये हम कह सकते हैं कि मान लो कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का पर्सन है, उसने सुन लिया कि अरे मतलब प्रभाकर और गौरव बहुत अच्छी बात कर रहे हैं क्लाउड के बारे में, मेरे को अब यही पढ़ना है, अच्छा, अपने को अपना करियर बनाना है, क्लाउड में बनाएंगे, तो उसके लिए क्या वो फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि ये चीज से स्टार्ट करो एंड देन स्लोली गेट इनटू द लाइक द प्रोफेशनल क्लाउड करियर. या आई थिंक जस्ट कमिंग बैक टू तुम्हारे सबसे पहले क्वेश्चन पे, कोई बिगिनर है, पहली बात यदि वो कॉलेज स्टूडेंट है, मतलब इसका मतलब अभी तक ना उसको डेटाबेस पता है इन डिटेल, ना राइट कोडिंग पता है. पहले आप अपना फंडामेंटल क्लियर करो. बीट आपको कोडर बनना है, आपको डेवलपर बनना है, स्पेसिफिक आप लैंग्वेज चूज करो, आपको डीबीए बनना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, आपको ऑटोमेशन में एंजॉय करते हो, क्योंकि अगेन देयर आर एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो मार्केट में है. आप कुछ भी सीख सकते हो और आप एक्सपर्ट बन सकते हो. आपको जावा आता है, आपको सी आता है, आपको सी शार्प आता है, आपको सीक्वल आता है, आपको जो भी आता है आप पहले उसमें स्मार्ट बने. आप उसमें लेवल 200 लेवल 300 अपने आप को एक्सप्लोर करो. देन आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जाते जाते, जैसे मैंने बताया, फिर अगेन आपको एज अ पार्ट ऑफ ओएस नेटवर्किंग या फिर बेसिक्स आप क्लियर करो, क्योंकि ये टॉप ऑफ आप जो भी है, आप एसआरई में जाना चाहते हो, आप डेवलपर हो, डीबीए हो, बेसिक्स आपके ये रहने वाले, ओएस एंड नेटवर्क कहीं नहीं जाएगा. फिर यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को सीख सकते हो, क्योंकि आपको बेस, आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो गया है. आपको एजोर सीखना है, एडब्ल्यूएस सीखना है, गूगल सीखना है, आप ऑन प्रीमाइस सीखना चाहते हो, आप कुछ भी सीख सकते हो. आपका फंडामेंटल्स क्लियर, क्योंकि अगेन आपने एक सीख लिया, दूसरे को आपको सिर्फ रिलेट करना है, नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो गया, तो शायद थोड़े से फीचर्स ऐड ऑन होंगे, दैट्स इट, और कुछ बड़ा चेंज नहीं होगा आपकी जिंदगी में. राइट. एंड आई गेस ये जो अभी आपने बात करी है, मीनू एंड एवरीवन, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स और कपल ऑफ मिनट्स हम एक गेम खेलने वाले हैं प्रभाकर के साथ, जिसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है. मतलब मैं अभी आपको हिंट देता हूँ कि मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेजोन में लेट्स से कंप्यूट को हम लोग EC2 बोलते हैं, तो हम उसको एज्योर में क्या बोलेंगे या गूगल में क्या बोलेंगे, जस्ट एज एन फन. सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि यार सिर्फ ये हम नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर रहे हैं, बेसिक्स फंडामेंटल सेम ही रहने वाले हैं. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज क्या है, किस तरह की स्टोरेज है, एंड हमें उसको सही जगह पर कहाँ लगानी है, एंड दैट्स इट, nothing else. And for Minu, just want to add to the Prabhakar's point. First of all, decide why you want to be a cloud engineer. If you are good in developing, go ahead with that. If you're good in administration, go ahead with that. If you are ready to explore something new and exciting, come for cloud. तो उससे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बिफोर वी जंप ऑन टू द क्विज. प्रभाकर, मैंने ये चीज बहुत सुनी है कि यार क्लाउड जो मतलब एक प्रोफाइल है, या इस तरह से बोलो कि क्लाउड जो डोमेन है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है, इट इज नॉट मेंट फॉर डेवलपर्स. योर टेक ऑन दैट. दिस इज, आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाउड एक ऐसी है जहां पे आप सारे टेक्नोलॉजी यूज करते हो. स्पेशली जैसे मेरा बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, आपका कंटेनर एज सर्विस है, हमारे जो टीममेट्स हैं प्रशांत, विविन, सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, और हम सब एज ए क्लाउड में काम कर रहे हैं. स्पेशली अनंत जो कंटेनर्स में है, प्रशांत वो भी अगेन कंटेनर्स, विविन वर्चुअलाइजेशन से माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज. तो ऐसा नहीं, क्लाउड पे आप डेवलपर हो, आप तब भी क्लाउड पे काम करो, क्योंकि एज एन आप ट्राई टू अंडरस्टैंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसमें सारे पिलर्स चाहिए होते हैं. क्लाउड इज वन ऑफ द पिलर जहां पे एप्लीकेशन होस्ट होगा. आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हो वो सिर्फ आपको बेस प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं मुझे डेटाबेस चाहिए, तो कोई भी प्रोवाइडर मुझे सिर्फ बेस देगा उसका, बट ऑन टॉप ऑफ दैट ये मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है, MS SQL, माई SQL या कोई भी नो SQL DB, वो मेरे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो वहां पे एक DBA चाहिए ही होगा. एज एन एप्लीकेशन मुझे एप्लीकेशन बनानी है, मुझे डेवलपर चाहिए ही होगा. वो डेवलपर में भी शायद मेरे पूरे जो डिप्लॉयमेंट मेथड है
आप जैसे फॉर डेवऑप्स की बात कर लो, डेवलपर है उसे डेवऑप्स आता है, उसे कोड बेस चाहे वो ऑन प्रीमाइसेस डिप्लॉय करे या क्लाउड पे डिप्लॉय करे, मैकेनिज्म वही है। तो आप क्लाउड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट है, बीट है नेटवर्क इंजीनियर, आप एसआरई की बात कर लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन, हाँ स्पेशली वर्चुअलाइजेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्योंकि क्लाउड में मैनेज हो जाती हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होगा पर आपको डे टू डे आप यूज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट, आपको पता होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक लेयर है, फॉर एग्जांपल आप कोई मुझे बोलता है कि मुझे इन टर्म्स ऑफ ऑन प्रीमाइसेस मैं नेटवर्क मैनेज करता हूँ, मतलब मैं हार्डकोर स्विचेस हब्स मैनेज करता हूँ, हाँ आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। आप फायरवॉल मैनेज करते हो, आप क्लाउड पे फायरवॉल मैनेज कर सकते हो, फिजिकल नहीं होगा वर्चुअल होगा पर फीचर्स सेम है। आप कोई भी फायरवॉल ले लो, आपको सेम है, आप स्टोरेज ले लो एज अ सर्विस है, बट आपका कॉन्सेप्ट है, आपको मतलब आपको आईओप्स बढ़ाने हैं, आपको थ्रूपुट बढ़ाना है, वो सेम है। वहां पे आप राइट, फिजिकल बॉक्स में कर रहे थे, यहाँ पे एज अ सर्विस आपको अप्लाई करना है। आपको बस आपको राइट, नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन सा स्टोरेज होगा, कि क्लाउड एक ओशियन ऑफ सर्विसेज है, हर दिन नई नई चीजें आती हैं, आपको बस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेस्ट है वो आपको डिसाइड करना होगा। राइट। एंड आई गेस एडिंग टू द पॉइंट यू राइटली सेड कि मेरे अकॉर्डिंग तो आज डेवलपर्स जितना क्लाउड यूज कर रहे हैं उतना एडमिन भी नहीं कर रहे हैं शायद तक। टोटली लाइक आई आई कैन रिलेट। पिछले दिनों मेरा एक फ्रेंड था हु वाज यूजिंग दिस विजुअल स्टूडियो कोड to code at his laptop, and he asked me kya my company has switched to xyz vendor, and now I'm likely to move my all application to cloud. यार बट अब मैं क्या करूं, मुझे तो क्लाउड आता नहीं, एंड आई जस्ट सिंपली गेव हिम दिस plugin where he can just install Visual Studio Code on his cloud provider, और वो पूरा का पूरा कोड इंपोर्ट कर देगा। एंड आई गेस जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि क्लाउड कुछ नहीं है, आप अपना सिर्फ डेटा इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर रहे हो। तो अगर मेरा एग्री। वही सेम प्लेटफॉर्म एज इट इज क्लाउड पे चल रहा है, तो मेरे को अंडरलाइन प्लेटफॉर्म का वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? कि टोटली। वो यहाँ लोकल डेस्कटॉप पे चलाऊं या किसी के भी सिस्टम पे चलाऊं, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं सिक्योर हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू द थिंग्स। सो ये मिथ बहुत गलत है इंडस्ट्री में कि यार अगर आप डेवलपर हो तो आप क्लाउड नहीं सीख सकते, या आप एडमिन हो तो ही क्लाउड का फायदा है। It is nowhere relating to each other. It totally depends on your use case. If your use case is justifying, go ahead and use the cloud. Otherwise, just enjoy what you are doing. So with that, Prabhakar, I'll leave the like stage questions for next 5-7 minutes. People, please feel free to drop your questions in the chat while I'll switch my gears to the next round. And the next round is simply says, मतलब मैं कुछ नाम तो नहीं सोचा मैंने, बट चलो मैं ऐसे दे देता हूँ कि टेस्ट प्रभाकर नॉलेज करके राउंड दे लेते हैं। सो इस राउंड में होगा क्या प्रभाकर, आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन दैट यू लव द मोस्ट। मतलब हमने क्लाउड सर्विसेज टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने हिंट में दिया, आई विल बी आस्किंग यू कि अमेजोन में कंप्यूट सर्विस के लिए हम लोग सर्विस यूज करते हैं विच इज कॉल्ड इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2। एम आई राइट? यस। सो सिमिलर वे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम Amazon में हम कंप्यूट सर्विस को EC2 बोलते हैं, तो हम उसको एज्योर में क्या बोलेंगे? एज्योर में वर्चुअल मशीन। वेरी सिंपल। सो लुक पीपल, इट इज दैट मच इजी। तो अब हम लोग करने वाले क्या हैं, हम ऐसे प्रभाकर से पूछेंगे 10 क्वेश्चन। अगर प्रभाकर ने 10 के 10 आंसर दिए सही, तो मैं उनको कुछ दे दूंगा, और अगर उन्होंने 10 में से एक भी किया गलत, तो वो मुझे कुछ ना कुछ स्वैग गिफ्ट कर देंगे। सो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम आपस में बांट के खेल लेंगे। सो दिस टाइम वी आर नॉट हैविंग फॉर एनी टाइम ऑफ ऑडियंस, बट डेफिनेटली दिस सेक्शन यू विल ऑल will be enjoying, and you will getting in a fun way of learning कि यार एक क्लाउड प्रोवाइडर में हम किसी सर्विस को बोलते हैं, तो दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर में हम सेम सर्विस को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, नथिंग एल्स। सो विद दैट 3, 2, 1, सो प्रभाकर, योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस कॉल्ड ब्लॉक स्टोरेज in हाँ। Amazon, we just simply called it as Amazon Elastic Block Storage. What we is the name of service in Azure? Basically, in Amazon, we say S3 storage. Specifically, on Azure terms, we say Azure Blob. Right, but you twisted the question. So that is somewhere we say object storage. I talked you about block storage. Sorry, it's the block or blob. So block storage. So when we talk about block storage, तो जहाँ पर हम लोग Amazon में EBS यूज करते हैं, Yes. Elastic Block Storage, तो हम Maइक्रोसॉफ्ट में क्या यूज करेंगे?
They say HDD and SSD. They have again bifurcated. राइट. So they सो got वही चीज HDD. नहीं थी. हाँ, Yes, मतलब मैनेज स्टोरेज बोलते हैं अगर हम managed storage, जनरल unmanaged तो storage. Previously they had राइट. unmanaged. Now they have converted everything to manage. राइट. तो देखो फ्रीक्वेंटली नाम चेंज होता है और प्रभाकर को हम चलो एक लाइफलाइन दे देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रभाकर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनएस सर्विस, तो Yes. डीएनएस सर्विस में हम एज्योर में जब हम उसको एज्योर ट्रैफिक मैनेजर बोलते हैं तो हम उसको अमेजोन में क्या बोलते हैं? Route 53. राउट 53, वेरी करेक्ट आंसर. चलो मैंने ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया था. अरे, अब मैं एक बड़ा बड़ा बहुत मतलब ये मेरे दिल के क्लोज क्वेश्चन है. व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेनर सपोर्ट, सो uh, लोग अमेजोन में बोलते हैं इलास्टिक कंटेनर सर्विस. व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस इन गूगल? Google. यस. I think they were somewhere called container engine, if I'm not wrong. You got it right. Definitely in Google we say it as a container engine और हम लोग Azure में उसको बोलते हैं Azure Container Service. Container service, Right. yes. So ये ठीक है. Now let's move on to the next. When we talk about virtual network, हमारे हाँ. विपिन भाई ने virtual का नाम निकाल दिया है. And when we talk about virtual network, Amazon में हम लोग बोलते हैं Amazon VPC. Hmm. What do we say in Azure? Azure Virtual Network, Very VPC. simple. Yes, Yes. एंड सिमिलरली अगर मेरे को क्लाउड अगर मैं गूगल के लिए बोलता हूँ, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज क्लाउड वर्चुअल नेटवर्क. yes, राइट. yes. राइट. ऑसम. तो मेरी नॉलेज भी साथ साथ टेस्ट हो रही है. तो चलो ठीक है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज ऑल्सो वेयर एडमिन लव्स द चैलेंजेस द मोस्ट, विच इज कॉल्ड लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग. And for Uh, it, the Amazon uses the service called Amazon Cloud Trail. What is the name of service in Azure? Basically, previously Microsoft has a bifurcation. Means basically they Mhm. had Azure Logs, Azure Operational Insights, and monitoring. Now everything they have clubbed under the bracket of Azure Logs. So now in this if it's specific to CloudTrail, it's called Operational Insights or Activity Log. They have bifurcated. Awesome. Similar way, Google Cloud इसको बोलते हैं cloud logging. So I guess everybody, it's just the name game, nothing else, right? Okay. एक बड़ा अच्छा नया terminologies चल रही है मार्केट में, which is called analytics, right? Yes. तो हम लोग Azure में जब हम लोग यूज करते हैं, so we just simply say it as a Azure Stream Analytics. What is the service name of Amazon provided for analytics? Again, in analytics, total all bracket, we have multiple services starting from Redshift, then going for visualization, we use QuickSight. For streaming, we use Kinesis Firehouse. So again, under the bracket of analytics, there are n number of services. Specific to stream is Kinesis and Kinesis Firehouse. ऑसम. दैट वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर. पर चलो ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग है जो आजकल सब लोग बात कर रहे हैं और क्लाउड का जहां पर ये बात आ गई, आई गेस ऑटोमेशन इज समथिंग दैट एवरीबॉडी लुक्स फॉर, राइट? अच्छा, इसको मैं ट्विस्टिंगली पूछता हूं, आपको इसका आंसर देना है. व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस यूज्ड फॉर ऑटोमेशन इन Amazon and Azure, where we say in Google it is compute engine management? तो Amazon की और Azure की सर्विस का नाम क्या है? अमेजोन में तो भी क्योंकि थोड़ी एजोर का नाम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट अमेजोन में समवेयर वी से ऑप्स वर्क बट नॉट यस. रिमेम्बर एजोर नेम. Azure में बहुत सिंपल है. Azure ऑटोमेशन, वेरी सिंपल. ओके. अच्छा, हम लोग क्लाउड में हमने इतनी सर्विसेज का काम किया. वी वर बी लाइक यू कैन से हम लोग बहुत सारे सर्विसेज को यूज करते हैं, मिक्स मैचेस करते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस का नाम उछल के आता है और जहां से हमें पता चलता है कि यार अगर हमें कुछ भी लाइक ध्यान रखने की जरूरत है, विच इज टिपिकली कॉल्ड नोटिफिकेशन, यस. राइट? तो हम लोग जब Azure की बात करते हैं, Azure में हम लोग बोलते हैं Azure नोटिफिकेशन हब. सो व्हाट इज द सर्विस नेम ऑफ Amazon फॉर नोटिफिकेशन? पुश नोटिफिकेशन समवेयर. ये आपका गलत हुआ. मेरा स्वैग बॉक्स कल लेकर के आना ऑफिस, बट इट इज सेड इज एज Amazon SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस. बड़ा सिंपल एंड सोबर नाम है. अरे ओके. चलो. फाइनली चलो एक स्वैग बॉक्स मेरे घर पे आते हुए बहुत टाइम के बाद.
ओके, कमिंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मतलब मैं और पूछ लेता हूँ, एंड विच इज लोड बैलेंसिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लोड बैलेंसिंग, amazon के अंदर नाम है इलास्टिक लोड बैलेंसर बैलेंसिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ एज्योर सर्विस फॉर लोड बैलेंसिंग? Again, Microsoft database says load balancer. Again, they have bifurcated external load balancer, internal load balancer, application gateway load balancer. So bifurcation is so basically they in a single term load balancer. That's it. That's load balancing for Azure, which is very much simple and sweet. तो मतलब मेरे को फन आ रहा है यार, तो मैंने एक आधा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ. हमने डेटाबेस की आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेटाबेस, तो अमेजोन की डेटाबेस सर्विस का नाम क्या है? और लेट्स RDS से स्पेसिफिक कर managed. देते हैं. Yes, it is RDS for NoSQL for SQL service. What is the name of Amazon service for NoSQL database? Uh, Amazon SQL for no and DynamoDB. DynamoDB. Yes, it is Okay. DynamoDB. Similar way में मैं viewers के लिए easy कर देता हूँ. When we talk about SQL service for Azure, it is Azure SQL database, and for NoSQL, if I'm not wrong, it is DocumentDB, right? Again, basically now they are somewhere rebranding its name. They are removing document DB and something unique. I think new name came up. I'm not remembering that. Last week I was studying, basically doing the comparison. So they have rebranded as a document DB as with a new name. Okay. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, ये ट्रस्ट मी एकदम लास्ट क्वेश्चन है. सो हम लोग जब बात करते हैं Amazon AWS Lambda, which हाँ, is the service I'm talking about? When we say AWS Lambda, I'm talking to which service? basically function as a service specifically. Huh? Function as a service specifically. And specific term, if we talk about, it is. Sorry, Mr. I'm not able to connect. अगर Function. मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं टॉक कर रहा हूँ AWS Lambda, तो AWS Lambda हम लोग क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? इज इट ऐप होस्टिंग, कंप्यूट सर्विस है, या It's a part of स्कीमा? compute service. It's a part of compute service. Yes, and specifically it is serverless computing. Yes. So So well. just to make it very easy for everyone. Yeah. So that is the quiz from my side, which clearly I can see Prabhakar has lost. So, but no problem. All gifts to my side, but thanks. But again, I hope everybody enjoyed that part. कि यार क्लाउड पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं चाहिए, तुम्हें फंडामेंटल्स चाहिए. बस वो फंडामेंटल्स को ग्रैब करो, and I guess rest is very easy. I'll be drafting this summary and I'll put it on my LinkedIn. I'll tag Prabhakar there. All the viewers, please feel free to reach out to Prabhakar, ask your questions to him. If you still have any questions, reach out to me and I'll be happy to answer them up as much as I can. And with that, Prabhakar, I know this is your debut on YouTube. मतलब प्रभाकर का कोई भी वीडियो किसी को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया तो भी चीयर्स विद गौरव पे, व्हिच इज अगेन द बेस्ट चैनल. सो अगेन थैंक यू सो मच प्रभाकर. एनी लाइक words that you want to say to our viewers or to all the listeners out there who are going to like view and right now listening to us? Any tip, advice, last words from your side? So I see nowadays everyone is just we have to just provide be a mediator to them. Means we have to just guide them, not a tutor or somewhere. So we just try to learn a basics. Always try to focus more toward your basic, clear your fundamentals. The rest you can learn any of the technology. Just try Right. to learn fundamentals. That is the basic of any of the technology that you want to learn. In simple word. Yeah. So thank you so much, Prabhakar. And I just want to say literally thank you for all the time and energy that you put in helping me in acquiring the new skills. Your patience literally has helped me grow tremendously in the work that I have that we are doing together. Definitely, you don't know it yet, but definitely your guidance as a mentor, as a friend, has definitely bring a significant difference in my work life, and I guess to many to whom you interact every single day. I always wish good vibes to you and all the good wishes. Pray for your healthy and wealthy life. अद्दू को बहुत सारा प्यार, भाभी को नमस्ते, अंकल आंटी को नमस्ते, भैया भाभी को नमस्ते. And I Thank hope in some other podcast we will bring some another exciting topic with you, and we will be doing such more collaborations. So people, please leave your comments for Prabhakar. If you have anything that you want, please feel free to let me know. I'll be more than happy to answer any questions, and so does Prabhakar.
So, Prabhakar, thank you so much for being here with Thanks. us. Once again, cheers. Thank you so Thanks, much. Gaurav, for inviting me. I think we are using the same glass that we got gifted Yes, last right now we time. are using the same one. Yeah. Thank you so much, man. Thank you so much for joining me live. Thanks. Take care. Bye Thanks, bye. everyone. Thanks for joining. Have a great day. Bye bye. Thank you. Bye-bye. And with that, that's another wrap for an exciting session. Please let me know how you like the session. Feel free to drop your comments. Reach out to me on LinkedIn, Instagram, Twitter, wherever you wish to. If you have my WhatsApp, I'll be more than happy to accept the like your valuable feedback. And with that, today we are wrapping up this session on the positive note that Prabhakar also said: learn from your fundamentals and scale to the cloud. So, what I want you all to please focus on your fundamentals and let me know what kind of typical session you want. DevOps पे चाहिए, developers पे चाहिए, administration पे चाहिए, automation पे चाहिए, containers, Kubernetes. Your friend is here to help you. तुम्हारा भाई अब वापस bounce back कर चुका है to help you on. Definitely some more exciting and interesting topic videos are coming up your way. Please like, share, and subscribe to Cheers with Gaurav. And what I can simply say to all of you, stay healthy, keep learning, keep enjoying. I'll see you with another exciting video lined up for you all. Thank you so much for joining us today. Keep learning, keep sharing, keep hustling. Thank you so much. Stay healthy, be fit. Thank you so much, guys, everyone.